Hi students, how are you? In today's class, we will do some activities related to chapter 4. So, let's start doing activity. Our activity class we will do this one activity in this class. Create the table as shown and perform the following tasks. We will create the table like this. Then insert two columns on the right of the table. We will insert two columns in the right side of the table. Okay. Type the heading in the column as profit and loss respectively. Then we will write heading as profit and then loss. Add border and shading. Then we will apply border and shading to the columns and apply table style of your choice. Then we will change the style of the table. Okay, this activity is given on page number 66. More fun in lab, question number 2. So let's start. To begin the activity, first we will know what is cost price, sale price, and how we can calculate profit or loss. First, cost price, the price on which we buy a thing or we purchase a thing. Okay, this is called कॉस्ट प्राइस. जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो जितने पैसे में हम खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. एंड द प्राइस ऑन विच वी सेल अ थिंग दैट इज कॉल्ड सेल प्राइस. जिस प्राइस में हम किसी सामान को बेचते हैं दैट इज कॉल्ड सेल प्राइस. एंड व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. इस केस में सेल प्राइस ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तभी हम सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर सकेंगे. ओके. एंड लॉस, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन सेल प्राइस देन इट इज़ लॉस. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. यहाँ पे जितने में हम सामान खरीदते हैं और उससे कम पैसे में हमने उस सामान को सेल कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया. जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यू हैव बॉट अ स्टोरी बुक इन 10 रुपीज़. आपने 10 रुपीज़ में एक स्टोरी बुक ली है. ओके. अब आपको ये पसंद नहीं है, यू वॉन्ट टू सेल दिस. आपको इसको सेल करना है, बेच देना है. एंड इफ़ यू सेल दिस वन इन 15 रुपीज़, how much profit you have gained? 15 minus 10, 5 rupees. ओके. यहाँ पे सेल प्राइस क्या हो गया? 15 एंड कॉस्ट प्राइस क्या था? 10 रुपीज़. सो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹5. एंड इफ you have bought the story book in 10 rupees and you have sold it in only 8 rupees, तो आपको क्या हुआ? यहाँ पे आपने 10 रुपीज़ तो लगाए थे बट 8 रुपीज़ में ही आपने उसको सेल किया. मीन्स आपको यहाँ पे लॉस हो गया. कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ ग्रेटर है, सेल प्राइस 8 रुपीज़ लेस है, तो 10 माइनस 8 2 रुपीज़ का यहाँ पे क्या हो गया? आपको लॉस हो गया. तो यही कॉन्सेप्ट है इस टेबल को बनाने में. फर्स्ट वी विल काउंट द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम टू इंसर्ट द टेबल. ओके. You can see the number of columns are only 3 and number of rows are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Now we will insert. We'll insert table. Click on insert tab, table option, insert table sub option. In number of column we will type 3 and in number of row we will type 7 and click OK. Okay. Now we will adjust it. We will make it shorter. Now it is okay. Now we will start typing headings. Like first we will type articles. Now to jump in next cell we will press tab key and start typing cost price. Cost price in rupees. Okay.
Now again press tab key and start type. See class, now we have finished typing. Now the text of the first row should be in red color and in center alignment. So we will select all the cell of the first row, shift plus right arrow key, and we will click on center alignment and text color red. Okay, now it is exact looking like our textbook. Now the first we have to do, insert two column in the right side. So first we will place the cursor anywhere and click on layout tab and click on insert right two times. Okay, now see, two blank columns are inserted. Now we will type the heading of the column, like first we will type profit. Okay, profit in rupees, and now we will type loss. In rupees. Okay, now we will start calculating, either it is profit or loss. किसी भी ऑब्जेक्ट का या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. तो फर्स्ट वी विल सी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट और ईच आर्टिकल. ओके, फर्स्ट वन सी रेडियो. द कॉस्ट प्राइस इज 1500 and selling price is 1200. So you can assume easily it is profit or loss. Here the cost price 1500 is greater than 1200. So here it will be loss. So first we will click in the loss column, and here we will click on layout tab, formula option, and we will type here equal sign and cost price is 1500 minus selling price is 1200. Enter. See, the loss is of rupees 300. In this way you can calculate profit or loss of the second article, video game. Here cost price is 1800 and selling price is 2100. So selling price is greater than cost price, so it is profit here. So now click in profit column and again click on layout tab, formula option, and this time you have to type equal sign, then 2100 minus 1800. Enter. So here profit of 300. In this way you can calculate rest articles. See, now I have completed the calculations. Okay, now the third step, we have to provide these two columns to the border and shading. The borders are already given, so we will give only the shading. Okay, so first we will select these two columns. Okay, now we will click on design tab and shading, drop down arrow next to the shading option, and give any transparent color like this. Okay, now the two columns are now shaded. Now we have to change overall style of the table. So first we will select the table, click on the move handle. Okay, and click on design tab and any one of the design. You can see more design on clicking on the
this scroll button, and now you can select any design of your choice. Okay, now see, now your table is in professional look. So this is the class of the today. You have to do this at your home. Okay, so goodbye for this class.